Hello and welcome to another part of physics and you can see कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर सरफेस टेंशन। तो एट फर्स्ट मैंने सोचा कि आपके लिए हाइड्रोस्टैटिक्स या हाइड्रोडायनामिक स्टार्ट करें, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार चलो सरफेस टेंशन स्टार्ट करते हैं बिकॉज इट इज अ कम्प्लीटली न्यू टॉपिक दैट यू हैव नॉट स्टडीड बिफोर। ओके, और आपके तो जेईई डेट्स भी डिक्लेयर्ड हो चुके हैं। आई थिंक शॉर्टली आपके नीट के डेट्स भी आ जाएंगे। और तो अभी जेई तो सामने है आपका 16 अप्रैल, मार्च महीना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो फिर आपको अब क्या करना है, थोड़ा बहुत जो आप पढ़े हुए हो उसका रिवीजन भी स्टार्ट करना है और नए चैप्टर्स तो आपको करने हैं, लेकिन कोशिश करना कि 1 अप्रैल जब हो जाए ना आपका 16 अप्रैल से तो आपका पहला सेशन एग्जाम है। सो 1 अप्रैल से ये जो 2 हफ्ता जो आपको टाइम मिलेगा ना, उसमें कोशिश कीजिए कोई नया चैप्टर ना करके अब जो किए हुए हो चैप्टर उसको रिवाइज करने के लिए। ओके, सो ऐसे कुछ कुछ बातें हम लोग करेंगे बाद में स्ट्रैटेजी सेशंस में। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम हियर एंड लेट्स स्टार्ट सरफेस टेंशन व्हिच इज अगेन अ स्मॉल टॉपिक। एंड एक चीज ये भी है कि जेई में एनटीए जब से क्वेश्चन करना स्टार्ट किया है तो फ्लूइड्स में ये एनटीए वाले ज्यादा वेटेज नहीं देते हैं, तो फ्लूइड्स के क्वेश्चन कम ही आते हैं रिलेटिवली बाकी चैप्टर से। बट स्टिल वी नीड टू कवर बिकॉज हो सकता है इस साल आ जाए काफी वेटेज में या फिर कहीं आपको इसका एप्लीकेशन आ जाए। ओके, सो लिटिल बिट ऑफ दिस पार्ट, अ थ्योरी, this cohesive and adhesive forces. Okay, so basically ये क्या है, हम लोग जो फोर्स है ना इसको हम लोग यू कैन डिवाइड इट बिटवीन द टाइप ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बेस करके। मतलब एक बॉडी के साथ दूसरा बॉडी का जो रिलेशन है एज ए फिजिकल रिलेशन यू कैन से, इसके ऊपर बेस करके हम लोग इसको दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका कोहेसिव फोर्सेस और एक है आपका एडहेसिव फोर्सेस। तो कोहेसिव फोर्स देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। ओके, सो आप काफी अच्छा एग्जांपल मान लो आपका वाटर सरफेस, ये वाला वाटर सरफेस है। तो वाटर सरफेस में आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो इस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर ये फोर्स लगाएगा। तो these are at force of attraction between the water molecules which are same, so this is a cohesive forces. Okay, और अगर डिफरेंट सब्सटेंसेस हो गया तो ये आपका एडहेसिव फोर्सेस हो गया और फिनोमेना को हम लोग कहते हैं एडहेशन। ओके, अब ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ओके, बिकॉज देखो आपकी यूनिवर्सल फोर्सेस होते हैं ना, चार तरह के आपकी यूनिवर्सल फोर्सेस होते हैं। एक होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा होता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब क्या होता है कि देखा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स का ओरिजिन सेम सेम होता है, तो काफी जगह यहाँ लिखा रहता है कि इलेक्ट्रो वीक फोर्स दोनों को मिला के। लेकिन वी विल कंसीडर दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल फोर्सेस। ओके, आपके फाइनल एग्जाम्स में फिजिक्स में आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल फोर्सेस आर देयर। एकदम पहला जो चैप्टर है ना आपका फिजिक्स का, फिजिकल वर्ल्ड, उसमें आपको दिया रहता है ये वाला पार्ट। ओके, सो दे वैरी विद द 8th पावर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो आर मान लो अगर डिस्टेंस आर होगा तो आर टू द पावर 8 पे वो वैरी करते हैं। ओके, इसके साथ साथ एंड you have to be careful that these forces are only responsible for surface tension. Okay, this is basically a little bit theory. Start करने से पहले थोड़ा आपको बेस देना हम लोग को। Okay, and now there are some wonderful pictures of surface tension. अब एक काम करते हैं, चलो surface tension पढ़ने से पहले let's move on to this part, the molecular theory of surface tension. थोड़ा सा ध्यान देना। Okay, what I am trying to say, see, this is the surface. Okay, this is the surface of the water body. The surface है, मैं वाटर बार बार वाटर
ये बोल रहा हूँ, आप यू कैन कंसिडर इट एज लिक्विड ऑल्सो, ओके, बट स्पेसिफिकली मैं वाटर ही कह रहा हूँ यहाँ पे। तो these are water molecules, ये जो spheres है छोटे छोटे, these are water molecules. So let's consider about this sphere, okay, this water molecule, let's consider about it. So this water molecule will experience forces from this water molecule, from this, from this, from this, from this, and it will experience, और देखो यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है। तो मैंने एक ग्राफ डायग्राम यहाँ पे दिया है आपको, हो सकता है, लेकिन ऐसे आप एक चीज समझो, यहाँ पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, इट इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, जो ऐसे ही ओरिएंटेड है कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो द नेट फोर्स ऑन दिस वाटर मॉलिक्यूल बिकम्स जीरो, ओके, नेट फोर्स आपका जीरो हो गया। अब आप एक सिचुएशन पे आओ जहां पे मैंने वाटर मॉलिक्यूल को ऑन द सरफेस मान लिया है, मान लो दिस वाटर मॉलिक्यूल जिसको मैंने येलो कलर से मार्क किया है, ओके, दिस वाटर मॉलिक्यूल इज एक्सपीरियंसिंग द फोर्सेस, थोड़ा सा मैं कलर को चेंज कर लूं, रुक जाओ, ओके, experiencing forces in the downward direction and towards this side, okay, but you can say that there is no upward forces, क्योंकि upward पे और कहाँ force होगा, आपका कोई force नहीं होगा, क्योंकि ऊपर तो कोई पानी नहीं, this is the surface only, okay, so here for the surface molecules these water molecules are not balanced, okay, यहाँ पे force balanced नहीं है, so there is a net force which is pulling these water molecules on the surface towards the downward direction, okay, नीचे की ओर खींच रहे हैं इसको। तो now I think you should understand why this water surface or liquid surface acts as like this, a stretched membrane, okay, you can like say like this, like, yeah, like a stretched membrane. So water surface acts like a stretched membrane, and this is the very phenomena due to which surface tension arises, okay. Now surface tension is nothing but the behavior of the liquid surface to act like a stretched membrane, okay. Now let's go to अगर मॉलिक्यूलर थ्योरी आपको समझ आ चुका होगा आई थिंक, ओके, कि क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर है, those who are not at the surface, they are experiencing equal forces from all the directions, so the net force cancels out and it becomes zero, but the molecules on the surface are experiencing only downward forces, so that because the downward forces does not get cancelled, sideways forces also get cancelled, but the downward forces does not get cancelled because there is no upward equivalent force, right? So it is like the water molecules are pushed downwards, sorry, pulled downwards, okay. This is why the surface acts like a stretched membrane, so this phenomena is called surface tension. Now we can move to the definition of surface tension. अब थोड़ा आप इस डायग्राम को देखो, doesn't it feel like yes, the water surface is acting like a stretched membrane? This is a mosquito. There is a thing that the mosquito can like stand in this water surface like this, okay. अब यहाँ पे भी आप देखो ना, इस पिक्चर को भी आप देखो, it is like a surface, stretched surface, right? अब ये तो काफी अच्छा एग्जांपल है आपका, देखो this is stretched surface, जैसे आप नेट, अगर नेट पे ऊपर खड़ा हो तो ऐसे ही होगा आपका, ये जैसे हो रहा है यहाँ पे, okay. So this is the definition that surface tension is a property of liquid by which liquid tends to acquire minimum surface area, is called surface tension, okay. Mathematically surface tension क्या है आपका? Force acting on a unit length of an imaginary line drawn on free surface of the liquid, okay. So basically this is nothing but T is equal to force per
unit length. This is your formula for surface tension. Okay, मान लो आपका ये liquid surface है, so this is, you can call this as the length, effective length कहते हैं इसको. Okay, so mathematically surface tension फिर क्या हुआ आपका, this is a force per unit length. Okay, so फिर मैं कह रहा हूँ molecular theory of surface tension आपको कोई problem नहीं होना चाहिए समझने में. I think this is easy to understand, easy topic. अब surface energy से आने से पहले let's go through this part again, molecular theory. देखो एक चीज सोचो आप कि इस वाटर मॉलिक्यूल को लेट्स से यू आर ट्राइंग टू मूव दिस टू द सरफेस. ओके, आप इस वाटर मॉलिक्यूल को मान लो सरफेस की ओर लेके जाना चाहते हो, तो अब क्या होगा, सोचो जितना आप सरफेस के ऊपर जाओगे उतना आपका ये जो बैलेंसिंग फोर्स है वो घटता जाएगा, बैलेंस कम होता जाएगा, और जब सरफेस पे आ जाओगे तब पूरा बैलेंस खत्म हो जाएगा. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस वाटर मॉलिक्यूल जब आप ऊपर लेके जा रहे हो डज नॉट एक्सेलरेट. सो कैन यू फील यार, आपको इस वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर ले जाने के लिए यू हैव टू डू सम वर्क, यू हैव टू परफॉर्म सम वर्क. ओके, आपने वर्क किया, देन वाटर मॉलिक्यूल्स को आपने सरफेस पे लेके आए. सो दिस सरफेस मॉलिक्यूल्स, जो सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स है, डू यू एग्री कि दीज मॉलिक्यूल्स हैव सम एक्स्ट्रा एनर्जी, राइट? क्यों? क्योंकि इनके ऊपर वर्क परफॉर्म किया गया है, सम वर्क इज डन ना. So this should possess some extra energy. This, right? So this is what is called surface energy. The energy, the extra energy the surface molecules possess is called surface energy, and that is what is written here. The extra energy possessed by the molecules of the surface film in comparison to energy molecules inside the liquid is called surface energy. Okay. Now you can define surface tension in terms of work also. You can define surface tension in terms of work per unit area, or increasing the area of the surface film by unit amount. Okay, or unit increase in area. So surface tension का आपका दो फॉर्मूला हो गया, एक work per unit area and another is your F upon L. Clear? So this is the funda of surface energy. Now let's try to understand when you are trying to increasing the area of the film, what is happening. Now let's try to understand this part. Okay, now you can understand that this is the frame. Okay, this is a frame A, B, C, D. This is a frame, and this AB portion can be movable. Okay, you can move, this is movable part. Now let's try to understand that you dip this frame in a soap solution. Okay, so how much work will be done when you are pulling this AB to, let's say, A dashed B dashed, right? And this B dashed has length X and this A's length is L. Okay, let's try to mathematically derive, and let's before that try to understand a little bit of the thing, that what will happen when it is dipped in a soap solution. You have to remember, or I can say you should try to visualize. You should not remember. How can you remember? You should visualize that a soap solution should have two surfaces. Don't you agree with me? A soap solution should have two effective surfaces, right? What will the two surfaces? One will be the soap water interface and another will be your water to air interface, right?
So in soap and water interface, you will have your surface tension as T, and in water and air interface, you will have your surface tension T. So the net and effective surface tension will be your 2T. So this is a thing that many people does a mistake with here, because क्या कर लेंगे ना, क्वेश्चन में आपको पूछता है या फिर सोप बबल पूछता है या फिर आपको वाटर बबल पूछता है, तो वाटर बबल जब होगा तब आपका एक ही सरफेस होता है, वाटर और एयर, वाटर एयर इंटरफेस, तो वहां पे आपको टी लेना है। लेकिन सोप में आपका इफेक्टिव सरफेस दो होता है, soap or water or air. Okay, so you have two surface. Now you know from the formula, the first मैंने जो आपको करा है कि T is equal to your F upon L. Okay, and this is the effective length that is under the soap solution. Okay, so completely dipped. So F will be is equal to, now what will be your F for soap surface? It is 2T. It is 2T, right? 2T into L, right? This is your force. Now how can you find the work done? How much did you move the frame? This movable part of the, you can say it is like a piston. This AB to A dash B dash, this length is X. So work done आपका होगा यहाँ पे, बड़ी आसान कैलकुलेशन है मैथ्स का, कि F into X. So what will be your F? This will be your 2TXL, right? So you can definitely write it as T into del A, और T into del A is just like this ना. अभी पिछले स्लाइड पे मैंने क्या दिखा सरफेस एनर्जी में फॉर्मूला, दिस. So what is the effective area here? Effective change in area 2Lx. This is the effective change in area. So this will be your work done when you are increasing the area of the film. Okay. So I guess ये आपको समझने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि देखो ये मैथ्स आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। जो समझ नहीं आता है कि why do we introduce this 2, कहाँ से आ गया भाई 2, काफी बुक्स में नहीं दिया है क्यों आ गया 2, कहा जाता है सिर्फ लिख देते हैं कि यार फॉर सोप बबल. ओके, बिकॉज सोप बबल हैज 2 free surfaces. You should remember this part. Okay, so this will be your work done. I think, let me mark it. Okay, T del A. Now this is another important part. Questions do come on this part directly. Okay, JEE में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं. क्या कहा है? वर्क डन इन ब्रेकिंग लिक्विड ड्रॉप. ओके, यू विल बी ट्राइंग टू, आपके पास एक बड़ा सा ऐसा ड्रॉप है. ओके, now you break this liquid drop to smaller parts like this. अब इसको अप्रोच करने के लिए you need a little bit concept कि आपका क्या होना चाहिए. अगर मैं मान लो यहाँ पे तो मैंने आपको 4 ही ड्रॉप दिखा है. Let's say that a single drop is broken down into n drops. अगर आप each and every individual drops का जो वॉल्यूम है उसका सम करेंगे तो it will generate this whole volume again. So there should be a conservation of volume. So let's write. So at first this volume of the sphere will be what? 4 by 3 pi. Let's say the big sphere has some radius capital R, pi r cube is equal to, and let's say volume of one small liquid drop will be 4 by 3 pi small r cube, but you need to do sum for n drops. एक ड्रॉप का तो 4 by 3 pi r cube हुआ, but there are n small drops, so multiply it with n. Okay, right? So now what? 4 by 3 pi cancel. So r, your small r will be r upon n to the power
1/3. This itself acts like an important formula. Okay, this itself acts like an important formula. You can use it as a shortcut in JEE. Now, work done you can find, but before that you need to find the change in area, isn't it? So let's find the change in area. What is the change in area? The area, change in area should be, okay, wait a bit, फिर से कर्सर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है. Okay, right. N drops into स्फीयर का सरफेस एरिया आपका आता है 4 पाई आर स्क्वायर. एंड बी केयरफुल अबाउट दिस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर. ओके, डोंट कंफ्यूज इट. और इसके लिए फिर क्या होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. ओके, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. यू गॉट इट. आपने डेल ए तो निकाल लिया, दिस इज इफेक्टिव चेंज इन एरिया. सो वर्क निकाल लो ना, टी डेल ए. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टी डेल ए. अब टी डेल ए करते हो तो देखो आपका क्या होगा, 4 पाई कॉमन ले लो आप यहां से, 4 पाई टी इंटू ये जो आपका डेल ए है ये क्या आ जाएगा फिर, एन स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर. Yes, you can put this small r's value here and you can definitely find the answer. Okay, so this is the funda that how you will approach this kind of question. Okay, and this is a very common question जो आता है आपके जेईई में. Clear that how you will approach this work done in breaking the liquid drop. Now this is again very important part. So time कितना हुआ? Okay, so pressure difference, I think it's a conceptual and mathematically good topic. Let's, okay, we'll cover this part in the next lecture. Okay, so I'll stop it here because 22 minutes is I think enough. All right, so अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना. ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में we will cover pressure difference, liquid drops, and we will see a lot more about capillary rise, meniscus को क्या meniscus होता है चीज, और फिर contact angle क्या होता है. we'll talk about those things in the next lecture. Okay, and then we'll move on to do some questions. Okay, चलो फिर यही आज खत्म करते हैं. बाय.